तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइल्स के टीवी। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ जो कि सेकंड क्यू कार्ड है। डिस्क्राइब अ बुक दैट यू एंजॉय रीडिंग बिकॉज यू हैड टू थिंक अ लॉट। You should say what this book was and why you decided to read it, what reading this book made you think about, and explain why you enjoy reading this book. ठीक है जी। तो बेसिकली अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें बुक के बारे में तो कोई पता नहीं, हमने कोई रीड ही नहीं की। तो उसका आंसर यही है, कोई भी अगर बुक पे कोई भी क्यू कार्ड आता है तो आपने एक क्यू कार्ड के लिए कुछ भी ले लेना है। फॉर एग्जांपल मूवी वाला क्यू कार्ड हो गया, बुक वाला क्यू कार्ड है, ये रेपिटेशन में आते रहते हैं। तो मूवी के लिए आप बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हो, एक एक्सप्लेन कर सकते हो। उसका सैम्पल आंसर भी मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बुक की बात करें, मोस्टली बच्चों ने क्या किया हुआ है, हेलन केलर जो 9th-10th में सभी ने पढ़ी है, ठीक है। नॉवल को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने और कोई बुक पढ़ी है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने सिंपली एक हेलन केलर का ही आइडिया लिया है। तो देखते हैं मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Although I have read numerous books in my life, one of them I read regularly and hence it is worth mentioning. I do not really get much time or opportunity to read many books these days, probably because I am just too busy earning my livelihood. But I guess I just got little lucky last summer when I got some time off my job, and that when I managed to read a good book was actually made me think a lot. The book I'm talking about is called The Story of My Life, which is written by Helen Keller, published in 1903. This book gives a very inspirational account of the world of a blind and deaf girl, whose speech development also ceased soon after as she grows up. The main character in this book, as the writer herself, Helen Keller, and the Annie Sunevan, a teacher who taught Helen Keller. This is such a book that it would be really difficult for reader to withdraw from it unless he or she finish it in just one sitting. And at the end of reading it, one sure would be able to put a smile on his or her face and restore spirit at a time when so much negativity enveloped us. By the way, I didn't really know much about Helen Keller except that she was some kind of English writer. But when I accidentally read an article about some of the most inspiration women figure of the 20th century last summer, I came to know about it in great more details, and it was at that time I decided to read this all-time American classical written by a prolific American author. Okay, बेसिकली ये मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो उसके आप नॉवल के बारे में बता सकते हो, कैसे वो कर रही थी डेवलप, कैसे वो डेफ थी, डम थी, लेकिन वो कैसे लिखती थी, कैसे वो एग्ज़ाम देती थी, उसके बारे में भी आप चीज़ बता सकते हो। एनीवे, I enjoy reading this book from start to finish primarily because it had me think a lot. In fact, I was losing my mind just to even imagine how possibly a woman with such debilitating disabilities could actually finish his graduation at a time and age when a very few men would attain a college and when the disabled would simply be neglected to the background and neglected like some kind of untouchable creatures. तो बेसिकली ये मेरा आंसर था। इसके अलावा अगर आपने बुक को एक्सप्लेन करना है तो विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी एक्सप्लेन कर सकते हो। रिच डैड एंड पुअर डैड भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी बुक जो आपने रिसेंटली रीड की हो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, फॉर मोर अपडेटेड आइल्स एंड रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।